Hello students. In this video, we are going to see the first method to solve the given differential equation. Solving means what? You have to find the solution to the given differential equation. So the name of the first method is variable separable method. Now, let us understand when this method can be used. Let's say a differential equation is given to you. Now, if it is possible to collect all functions of y and dy on one side and all functions of x and dx on one side. If it is possible, so you have to collect all the functions of y on one side, collect all the functions of x on another side. If you can do this, you can get solution to the differential equation by integrating on both sides. Okay, this is the simplest method we can say. This is the first method. Let us understand the example. Okay, so example number 1, solve dy by dx is equal to e to the power 3x minus 2y plus x square into e to the power minus 2y. Solve means what? You have to get the solution. What do you mean by solution? You have to find relationship between different variables. What are the variables in it? Yes, variables are what? X and y. X and y. Okay. Now let us see whether we can bring all the functions of y on one side and all the functions of x on one side. Okay, see how to solve such type of problem. So dy by dx is equal to, I will take e to the power minus 2y common. So in the bracket it will be e to the power 3x plus x square. Is it right? Okay. So we can bring e to the power minus 2y here, which is equal to e to the power 3x plus x square into dx. So we can write e to the power 2y into dy, which is equal to e to the power 3x plus x square into dx. Okay, see, I'm solving step by step. I'm not skipping any step. Okay, so those students who can solve by their own, okay, you can pause the video, you can solve it and check the answers. For those who still फाइंडिंग डिफिकल्टी, जिनको अभी भी डिफिकल्टी है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो स्टेप बाय स्टेप एक बार जरूर ये वीडियो देखे, सो दैट सारी की सारी तुम्हारी जो स्टेप्स है वो क्लियर हो जाएगी. ओके, अभी देखिए हमने क्या कहा था कि फंक्शंस ऑफ y हमने एक साइड में लाया है और फंक्शंस ऑफ x एक साइड में लाया है. सो वी कैन यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड. What it says, you have to integrate on both sides. On integrating to both sides, what you get? E to the power 2y into dy, which is equal to e to the power 3x plus x square into dx. Okay, what is integration of e to the power 2y? E to the power 2y upon 2, which is equal to, what is integration of e to the power 3x? E to the power 3x upon 3 plus integration of x square, x cube upon 3 plus constant. Okay, is it right? Yes or no? Okay, now see next step. Now I will multiply each term with 6. Okay, so let me write this. Okay, you can skip all these steps as this is a very first example, so I don't want that any student will do mistake. Okay, so what I will get? So I multiplied with 6. Why multiplied with 6? See, I want to remove this
denominator all 2 3 3, so I am taking LCM 6. Okay, so what I will get, 3 into e to the power 2y, which is equal to 2 into e to the power 3x plus 2 into x cube plus 6c. Instead of 6c, I have written here 6 dash. Okay, so we can write 6 dash is equal to 6c. These are constants only. Therefore, the solution to given differential equation, what will be solution? It will be, what will be your answer? 3 into e to the power 2y, you can take 2 common, e to the power 3x plus x cube plus c dash. So this will be your answer. Is it clear? So this is how you have to solve the given problem. Okay, so once you practice, okay, just as you practice karoge, you can skip most of the steps. For example, see, if it is a university exam, okay, you have to go by this approach only. But if it's a competitive exam, then see, you can simply skip this. You can, okay, you can directly write this. You can skip again this too. Okay, so in simply 2 steps, you can get the answers. Okay, so this is how you have to proceed. But for practice, I will suggest कि 3-4 प्रॉब्लम आपको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करने चाहिए. ओके, नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पे, सो दैट ये मेथड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व dy by dx is equal to 4x plus y plus 1 bracket square if y of 0 is equal to 1. ओके, इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं. y of 0 is equal to 1, इसका मतलब क्या है? जब x की वैल्यू 0 रहेगी तब y की वैल्यू क्या रहेगी? 1. Why? Because y is dependent on x. Y is dependent on x. Okay. So first see, is it possible to separate variables? No. So in such cases, first put or let 4x plus y plus 1 is equal to some variable t. If you differentiate this, 4 plus x का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 1, y का डेरिवेटिव dy by dx, 1 का 0 और t का क्या होगा? dt by dx. सो हम dy by dx फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा? dt upon dx minus 4. So the given equation becomes, so given differential equation becomes dy by dx क्या है? सी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ so that ओके. सो dy by dx क्या लिखेंगे? dy by dx की जगह dt upon dx minus 4 which is equal to, what is 4x plus y plus t? It is what? t. So it is t square. तो ये क्या बन जाएगा? dt upon dx which is equal to t square plus 4. Now, is this form where we can separate the variables? Answer is what? Yes. So let us separate the variable. Okay, how to separate it? Therefore, dt upon t square plus 4 which is equal to dx. Okay, so we have brought all the functions of t on one side, all the functions of x on another side. Let us integrate. On integrating, okay, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ प्लस सी. इंटीग्रेटिंग क्या आएगा? ओके, व्हाट इज दिस? सी, वी नो वन इक्वेशन, वी नो वन फॉर्मूला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या रहेगा? ये 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए. देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के हर एक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. ओके ओके, अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करता हो तो क्या आएगा? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, 1 अपॉन 2 tan inverse t upon 2 which is equal to x
plus c. Is it right? ओके अभी देखो इसको हम सॉल्व करते हैं. tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा, t/2 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2c. तो t/2 क्या बन जाएगा मेरा, tan ऑफ 2x प्लस 2c. इज इट राइट? ओके सो t क्या बन जाएगा, 2 इंटू tan 2x प्लस 2c. अभी t है क्या, see t is not there, so we have to put that value again back. So what is t? 4x plus y plus 1 which is equal to 2 into tan 2 भी कॉमन ले सकते हैं x plus c. ओके यहाँ अब तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. अभी देखिए हमें कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू अगर 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 1 है. ओके so putting x is equal to, put x is equal to 0 at that time y is equal to 1. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. क्या है इक्वेशन हमें, 4x plus y plus 1 which is equal to 2 tan 2 in bracket x plus c. Now x is equal to 0. See what I am putting, x is equal to 0, y is equal to 1. So 1 plus 1, 2 tan 2c. Is this correct? Right? Okay. तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 2 is equal to 2 tan 2c. 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या बन जाएगा मेरा, 2c. tan इनवर्स ऑफ 1 यानी क्या, pi/4 which is equal to 2c. सो c की वैल्यू क्या बन जाएगी, pi/8. ये c की वैल्यू हमें क्या करना है, ये इक्वेशन में पुट करनी है. ये c की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे. तो क्या बन जाएगा, 4x plus y plus 1 which is equal to 2 tan, sorry, 2 tan 2 in bracket x plus pi/8. आपको याद होगा हमने एक इक्वेशन देखा था SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन. अल्फा क्या लिया था मैंने, pi/4. So in such cases I have assigned now value of c as pi/8. So this is what, this is particular solution. This is what, particular solution. जो फर्स्ट एग्जांपल देखा था, it's a general solution, complete solution. Okay, so this will be your answer. This will be solution to given differential equation. Okay, देखो एक बार वापस रिवाइज करते हैं क्या क्या किया था. क्वेश्चन दिया था dy/dx is equal to 4x plus y plus 1 bracket square if y of 0 is equal to 1. देखो अभी वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है वो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. क्यों, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे. तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया, 4x plus y plus 1 is equal to एक कांस्टेंट, एक सपोज t वेरिएबल कंसीडर किया. ओके और फिर मैंने जो गिवन इक्वेशन है इसको ये फॉर्म में रिड्यूस किया कि जहां पे वेरिएबल सेपरेट हो सके. ओके वी हैव ब्रॉट द इक्वेशन टू व्हाट, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एंड देन वी हैव इंटीग्रेटेड इट. ओके इज द मेथड क्लियर टू यू. ओके तो यहाँ पे आपको एक बात नोट डाउन करनी है. जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम मिले जहां पे dy/dx is a function of ax plus by plus c. देखो ये क्या था, यही फॉर्म में तो था. दिस इज व्हाट, ax plus by plus c. ओके तो अगर ऐसे फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलता है, रिमेंबर you have to solve such equations by putting ax plus by plus c equal to some variable, and then you have to solve it. Is this clear? So this you have to note down. Okay, and this will be important, right? So hope with this two example it is clear
the first method, that is variable separable method. Right? Thank you.